Please tell us your name and roll number. So my name is Lopamudra Ratha. My roll number is 402265. Please give a formal introduction. Sir, I am Lopamudra Ratha. I belong to Dhenkanal and I have completed BTech in Biotechnology Engineering from Biju Patnaik University of Technology, Odisha. And currently I am working in Odisha Revenue Services and currently posted as additional Tahsildar Dhenkanal Tahsil Dhenkanal. Yes sir. ढेंकानाल कलेक्टर किए अछंती सर श्री सरोज कुमार सेठी. सरोज कुमार सेठी. आज्ञा सर. सब कलेक्टर किए अछंती सर श्री रविनारायण त्रिपाठी. अच्छा ए जो बाळ बडा केमका रखिछ पर इंटरव्यू रे इनका करके सब जीवो नहीं सर. आई विल टाई अप द हेयर. नहीं सेटा को सिंधिका परिवाटा मते भल लागुनी. आज्ञा सर. एटा बुलाबुली मार्केट रे बुलबो ओने समय कोन इंटरव्यू रे फेस कला जदी बो भया था कुछ न ना रे अछि ताको अलग प्रकार जेंका डिजाइन लुकिंग हो ताको ये फ्रंट केटा आसी. Yes sir. मैडम कोई में सेवा होते सी जी Sir, I apologize sir. I will tie up the hair. हां के पछपट देई के कलेक्ट के भलो जेंका हबो माने से माने कट ए जो हमर कोनटा बोलथि हमर ब्यूटी पार्लर. आज्ञा सर. ब्यूटी पार्लर करती जेंका माने लोपामुद्रा. आज्ञा सर. के सी Sir, Lopamudra was the wife of Sage Agastya. She was. आज्ञा सर. से सर श्री आमर अगस्त्य ऋषि जे थिले तांकर स्त्री थिले एवं से हो. आज्ञा सर. ऋषि अगस्त्य जणे थिले. अगस्त्य. 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 यस सर. अगस्त्य ऋषि बोली भी कहंती. अगस्ती अगस्त्य ना अगस्त्या कोटा ठीक. सर अगस्त्य बा अगस्ती से जणे लोक किंतु तांकर ए दुईटा रूप रे नाम लिखा है विभिन्न शास्त्र रे. वैदिक नाम लोपामुद्रा. आज्ञा सर. वेद रो जो माने सते बेले थिले वेद उपासना करथिले वेदज्ञ थिले. आज्ञा सर. वेदर कर्म कर्माणी ऊपर से माने पुरुष मान को सहित मिसी के काम करथिले. महिषी महिला सेही लोपामुद्रा. आज्ञा सर. आज्ञा सर. से लोपामुद्रा गार्गी. लोपामुद्रा गार्गी मैत्रेयी अपाला. मैत्रेयी अपाला आउ सबडा तो तार सब नाम सब अछि. आज्ञा सर. माने वैदिक रो एमाननको विश्व महिला समस्त एमाननको विश्व बंदिन बोली भी कहउतिले. लोपामुद्रा मैम जणे थिले से विश्व बंदिन और से केतेटा ऋग्वेदर किछिटा अंश भी लिखि छंती निजे. को जिला. आज्ञा ढेंकानाल. के से ढेंकानाल आसीला. ढेंकानाल जिलार जे अधिपति माने अधिष्ठात्र देवता किए. से श्री बलराम ठाकुर आम ढेंकानाल रो अधिष्ठात्र देवता. बलराम ठाकुर. ये सर. से जीव कहउछथि कोन कहउछथि बलभद्र जीव बा बलराम ठाकुर. ये ताको मंदिर को निर्माण करथि किछि करियो. सर मंदिर निर्माण गंग वंशर राजा माने करिथिले एंड सर सेटा बहुत ठीक अछि धरि चटी गंग वंश राजा माने करथि. इतिहास पढिछ ताले जणा जाउछि. आज्ञा सर. बहुत इतिहास पढिछ बोले जणा जाउछि. आज्ञा सर. गंग वंश दल्लडी माने आज्ञा सर. जणा अछि. पढिछ कि नै इतिहास. आज्ञा सर. ओ इतिहास पढिछ मते को. सर मु ओडिसा इतिहास पढी छी. ढेंकानाल रो इतिहास भी पढी छी. ढेंकानाल इतिहास के लिखिछंती. सर किए लिखिछंती सर मु बुक पढी थिली हरे कृष्ण दास जणे लिखिथिले. नहीं हरे कृष्ण दास से लिखिछंती पंडित आर्य कुमार. आर्य कुमार सुबोध कुमार प्रबोध कुमार मिश्र. आज्ञा सर. प्रमोद कुमार मिश्र. आज्ञा से सर. ढेंकानाल वासी भुवन में रहउछंती. आज्ञा सर. भुवन में भी रहउछंती. से सब ढेंकानाल इतिहास लिखिछंती. आज्ञा. अच्छा ढेंकानाल रो विशेषत्व कोन. व्हाई इट इज हिस्टोरिकली सो इंपोर्टेंस. सर ढेंकानाल होची ओडिसा रो मध्य भाग रे अवस्थित एंड ढेंकानाल रो विशेषता हैला एटा जे ढेंकानाल रे मेनी फ्रीडम फाइटर्स थिले एंड हमर फ्रीडम फाइटर के सब फ्रीडम फाइटर. सर बाजी राउत सारंगधर दास. सारंगधर दास. आज्ञा सर. सारंगधर दास कोन फ्रीडम फाइटर से भाग नैथिले कोठी का लोक से. सर सारंगधर दास होचंदी बेसिकली ढेंकानाल रो कामाख्या नगर रो लोक एंड सारंगधर दास को गड़जात गांधी भाव में लोक जानती. मेरा स्विच ओवर कर नहीं जोटा राइट माने राइट जानि बोली मु तापर स्विच ओवर कली मेरा मंडली कोन पई प्रसिद्ध. सर मेरा मंडली आई अपोलोजाइज
I'm not aware about. I know there is a place Mera Mandali, but I do not know. Yes sir. आज्ञा सर सेठी गोटे स्टेशन अच्छी रेलवे स्टेशन अच्छी आ सेठी किछि हमर इंडस्ट्रीज भी अच्छी सेठी केउझर रजा आ ढेंकानाल रजा को भितरे लड़ाई गोटे हेतिला आज्ञा सर केउझर रजा ढेंकानाल रजा भितरे लड़ाई हेतिला बल्कि बोले केउझर रजा को ये ढेंकानाल रजा परास्त कर दिथिले आज्ञा सर मराठा को समय गोटे युद्ध हेतिला लड़ाई हेतिला आज्ञा मराठा समर आज्ञा सर के रजा के थिले मराठा मानकर ये कोन थिला कोन दिन से कोन किछि आईडिया अछि सॉरी सर एटा म जानि आज्ञा सर सेतले राजा थिले महेंद्र बहादुर आज्ञा तिलोचन महेंद्र बहादुर तिलोचन महेंद्र बहादुर तिलोचन आज्ञा से मराठा जो आथिले चिमन भाई बापू नागपुर जो थिले जो तार हंसला ताकर जो थिले राजा ताकर मराठा बर्की मान मराठा सैन्य मान को बर्की बिली कुआ ये बोर्की मान को सहित ढेंकानाल को खेती पाइप मान को सहित लड़ाई हेतिला आज्ञा सर तिलोचन बहादुर महेंद्र बहादुर तिलोचन पे आज्ञा सर थैंक यू सर आज्ञा विषय पर कौन नहीं था एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी आज्ञा सर मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी इन ज्योग्राफी Sir, demography is always important in geography because it represents the population according to the age, and our working age population, which is called as demographic dividend, that is between the working age of population, that is highest in India, and that is very important because we can employ them in work, they are employable, we can develop their skills, and that will lead to economic development of the nation. Can you compare the world population with India and Odisha? Yes sir, the world population, India is the second largest country, and in Odisha we have 4.2 crore of people according to the census 2011, and India though is the 7th largest country in area wise, but it is the second most populous country of world. Do you think that this growth of population Yes sir. is really a barrier for the national development? No sir, the growth of population is not a barrier for development. population is not a barrier. No sir, because if we have more people to work, we can employ them in different industries, we can enhance their skills, we can use them in MSMEs, we can they can do better in the sector of entrepreneurship, they can be more employable, and if there will be more employment generation, there will be more jobs, there will be more skillful people, then the economy also grow, will be more developed economically. How about the global pollution? Sir, global pollution is there, and we will sensitize our people, we will make them aware. There must be a standard that what should be the population of population per square kilometer, or say so. How do you justify that if it increases, then what is the adverse effect of it? Sir, adverse effects, there can be more pollution, we can anticipate that, but if we use proper awareness program, proper sensitization programs, then pollution can be reduced to a greater extent. Like India is more garbage. No sir, if we can More houses, more concrete, use of more concrete, the use of more land and more and the deforestation. Also, those are happening nowadays. Yes sir, I do understand that, but if there is more garbage, like our government of Odisha is doing, we are segregating the wastage at the source, and we are doing solid waste management, liquid waste management, so that they can be reused, we can regenerate even power from them. And if we talk about the land resource is a finite resource, and we can, like people were staying in scattered houses earlier, nowadays people are staying in apartments.
that can also be a solution. And if we talk about deforestation, Suppose you be the Prime Minister of India. So now it is your now it is your duty to take decision on the population and the population program. yes sir. So will you restrict the growth of the population, or Sir, you allow that it will increase to anything further? Sir, as it is going on 2 children per couple, it will go on like that. I cannot restrict that to 0, because there should be reproduction also, there should be next generation also. If we will restrict that to 0, that will act as like in Italy, we see in the times of COVID, there are more older generation people, so they are more vulnerable to COVID and there are more death cases. If we will see that we can continue that with 2 children Then per you are couple. following the China policy. No sir, I am not following the China Now policy. China is following about the population explosion. Sir, China is following per couple. They had for many years they had per couple only 1 child. 1, Yes sir. Nowadays they have increased it to 2. 2 or 3. No sir, not 3. It is 2. Previously it was 2. Previous. But they have allowed 3. I apologize sir. As far as I remember, it is 2. The couples we are allowed to have 2 child in all. Yes 2 sir. children in all. Yes sir. Now they have now Up to 3 rather. no, they have now allowed 2 or allowed the 3 couple to children. have 3 children. Yes sir. Thank Now you they sir. allowed the couple to have 3 children. Thank You you see sir. that? I have read the papers. You see, please Yes sir. take it. Yes sir. Sir, if we will have people in next generation, if we will have more employable people, then we will have more economic growth. We cannot restrict that to 0, or we cannot restrict that population to very small extent. The basic fact is that nature is limited. Yes sir. Can you increase the number of rivers? No sir, I cannot increase the number of rivers, but we can adjoin the rivers. We can dig more canals. Where from you get the best water? You can dig the Sir, the water- earth and you can make the channel. But what about the water? Sir, water level is depleting, and we have also anticipated from different surveys that it will be very scarce in some cities like Chennai and Bangalore, that will go much beyond the earth, so much beyond the crust in fact. Sir, we have many program or strategies for like for Kaveri water dispute or Krishna water dispute. But in your opinion, Yes sir. should our government make a rule restricting the children of every family? No sir, it should be restricted to 2 or 3. We cannot restrict it to 0. No. I am not speaking. Even if the option is given to you, you are in charge of that Yes sir. policy formulation. So, what will be your judgment to it? Sir, I'll do it 2 or 3 children to a couple, because we have also in like in some states we have even in Odisha also we have like The government का slogan दूची हमें दूई हमारे ये सर आमर एक से मैंने चाहूचंती कि पॉपुलेशन टा टिके बेसी कमिबो. इंडिया रो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम कौन? इंडिया रो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. निर्मला सीतारमण. राइट? यस सर. कंफर्म करो ये. Yes, निर्मला yes, yes. सीतारमण माने आज्ञा? दबे की. You are not 100% right. निर्मला सीतारमण. You are right. यस सर. अच्छा. अब कौन ये इतना बहुत ही ढेंकानाल है. आज्ञा सर. ढेंकानाल में दुई जन विख्यात लोकंकर परिचय टिके दियंतु. सर जड़े विख्यात लोक होचंती हमर बाजी राउत, जे कि हमर यंगेस्ट फ्रीडम कोई रहउची गति कृष्ण मिश्र. गति कृष्ण मिश्र वाज जस्टिस.
जस्टिस Yes, sir. विमल जस्टिस में चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा Chief Justice of एटा Odisha. कौन जस्टिस में चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा Yes, sir. तापरे अब विमल किशोर मिश्र Bimal Kishore Mishra. I'm sorry, sir. I do not know about him. ढेंकानाल लोक Bimal, I do not know about Bimal Kishore Mishra. चीफ सेक्रेटरी थिले Okay, sir. ठीक अछि तो Thank you, sir. आ स्पोर्ट्स गेम्स ऊपर किछि रुचि अछि No, sir. I do watch, but I do not play. Gardening, you know, you have mentioned gardening. Yes, sir. नहीं से माने पचारिबे मना तो करि होबनी स्पोर्ट्स ऊपर लेखक लेखिका ऊपर किछि आई माने अछि रुचि अछि सर लेखक लेखिका ऊपर अच्छी मो लीजर टाइम रे किछि किछि बुक राइटर के एवं ताकर कोन बही भल लागे सर फेवरेट राइटर मो लास्ट पढ़ी थिली मनोज दास कर गोटे बुक प्रतिभा राय कर मनोज दास प्रतिभा राय कोन पई विख्यात सर मनोज दास तांकर गल्प संकलन गुड़िक विख्यात उपन्यास विख्यात ये सहित माने संपृक्त थिले सर को धार्मिक संस्था संगे से संपृक्त थिले मनोज दास सर धार्मिक संस्था जानी सेती असुविधा हो जदि जनकर बही पसंद होची गाड़ी के माने अधा गाड़ी के अधा छाड़ी देवा दरकार नहीं मनोज दास इज एसोसिएटेड विथ श्री अरविंद फिलोसफी यस सर असिरा जानिबा दरकार ना सर आई डू नो इट अबाउट अरविंद फिलोसफी बट यस सर मनोज दास सेठी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एवं सेठी ही से ताकर एंटायर लाइफ he had spent there at Pondicherry श्रीमान श्री अरविंद और मैडम प्रतिभा राय ओडिया लेक्चर ओडिया प्रोफेसर यस सर ओडिया प्रोफेसर she has written a number of books यस सर है यस सर कोन कोन बही लिखछन करी एडा सब बही सूची भी गोटे धरछि मुई बही सूची तांकर बही सूची उपन्यास प्रतिभा राय यस सर वर्षा वसंत वैशाख यस सर मग्न माटी अरण्य निषिद्ध पृथ्वी उपनायिका परिचय अपरिचिता पुण्योदया एडा सब उपन्यास गुडा यस सर बहुत उपन्यास जाग्ञ सेनी जोडा को जाग्ञ सेनी देहातीत उत्तर मार्ग आदि भूमि महामोह शेष ईश्वर एडा सब तांकर ये प्रतिभा राय कर सब अच्छा प्रतिभा राय को जति तो आउ सब के छथि हमर sir Sulakshana Devi from Dhenkanal she is the first woman poet of Odisha Sulakshana Devi she is the first woman poet of Odisha she is from Dhenkanal yes sir नंदिनी सतपति कर yes sir Nandini Satpathy माने को गार बहुसे सर से ढेंकानाल लो बहु देवेंद्र सतपथी को गार सर से ढेंकानाल लो गाँ मु जानी नहीं गला नहीं सर गाँ टा मु जानी नंदिनी सतपति का बापा को ना कालिंदी चरण पाणिग्राही कालिंदी चरण पाणिग्राही नंदिनी सतपथी भी तस्लीमा नसरीन का लज्जा उपन्यास को ओडिया रे अनुवाद करथिले ठीक अछि मैडम Okay. Your name is Lopamudra, right? yes ma'am How many years you are serving? Assistant consultant. sir ma'am I was serving for 4 years What is your experience? You have been posted there from initial. You are there. no ma'am I was in the beginning I was posted as additional Tahsildar Kishornagar in Angul district and after that I was transferred to additional Tahsildar Dhenkanal. Okay. What is that journey of yours? How was the journey? The journey is good I will say What is your learning? yes I did learn many things like I did learn revenue cases I did learn also the official matters simultaneously I did have some life experience too. What is the change that brought in you this experience? What is the change in your behavior that you brought about? Sir ma'am basically I am a very calm person and it has made me more calm and previously I didn't know about the plight of people in the remote area. I didn't have a very good knowledge about it. I didn't know about some issues but I have not seen it. After joining into the service I have seen people how they are surviving, how difficult it is for them, so it has made me more compassionate. Sometimes you have to be a bit strict. Yes, rather than ma'am. being compassionate. In which
which cases? I have to, in revenue cases, ma'am, if I am doing good for someone, that might hamper someone else. I can be strict to the person who is unauthorizedly doing something or who is illegally doing something. Those cases? Yes, ma'am. How do you rectify those cases? You know, someone is doing unauthorized. Or you Uh, just know it and you leave it on their own way? no, ma'am. I go by law. Whatever the procedure we have, whatever the punishment we have, I do implement those things. For example, in a case of Odisha public land encroachment case, when someone is unauthorizedly occupied a land, I do I do evict that person. Eviction. Yes, sir. What is that act, specific act? Odisha Prevention of Land Encroachment Act 1962. Eviction. Section 7. এটা তো more subject, you know. Okay. How can you evict a man from his or her encroachment? Maybe a private land or a government land. We do, What is the procedure? sir, we are the custodian of the government land. Right? So we can evict a person from government land. Procedure. I am asking the procedure. Yes, sir. The Ratanati you take any data out for No, sir. You have to maintain a procedure. Yes, sir. What is The that? concerned revenue inspector of that circle, he provides us, informs us about the encroachment in position. G form. He will provide you a field position. Yes, sir. The encroachment, land, khata number, plot number, and if necessary, he will trace out the butter trace. Yes, yes, is sir. the plot number. He will provide the trace map, khata number, plot number, Chahodi. even the kisam, even. Chahodi. Yes, sir. Chahodi बोले कौन बुझुच? चौहदी माने सर चारि पटे मेजरली सराउंडिंग रे कोन कोन प्लॉट्स अछि और तार ओनर्स किए किए चारि पटे अर्थ कौन? सर गोटे प्लॉट रो गोटे चारि पटे अर्थ कौन? मु सेटा पचारुछि। चतुर्पार्श्व रे चतुर्पार्श्व माने कोन? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आज्ञा सेटा को कहंती चौहदी। आज्ञा सर चारि पटे नुहे। आज्ञा सर पूर्व पट, पश्चिम पट, उत्तर पट, दक्षिण पट। आज्ञा सर प्लॉट रो उत्तर पटे राम हरिदास, पूर्व पटे अमक महांती, दक्षिण पटे अमक साहू, पश्चिम पटे अमक लोक। इसी दी चौहदी। एनीवे आज्ञा सेटा किमका हम तापरे तापरे सर जबे कंसेंट आरआई हमको देई सारुची जी मेमो देन आमे गोटे केस इनिशिएट करूछु तापरे सर आमे ता बहुत लेंथी प्रोसीजर। आज्ञा सर यदि लोकटा जदि माने मार्जिनल फार्मर हेतिबो कि लैंडलेस लोक हेतिबो सर जदि लैंडलेस लोक हेतिबो मार्जिनल फार्मर हेतिबो आमे ताको सेटल करि परिबा सेटल करिवे। आज्ञा सर अछि नियम रे आज्ञा सर कोन कोन करिवे सेटल करिवे? सर जदि लैंडलेस लोक अछि से हमर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भितर आसुची तार बाकी कोठी नाही लैंड नाही होमस्टेड लैंड एंड तार इनकम क्राइटेरिया बिलो 60000 अछि देन आमे ताको सेटल करि परिबा। केते परिमाण रो जमी ताको आपण देवा पई गवर्नमेंट रो नियम अछि? सर करेंटली आमे अप टू 10 डेसिमल जमी देई परिबा होमस्टेड लैंड आमे बेसिकली 4 डेसिमल दउछु। इफ दैट लैंड बिलोंग्स टू पतरा जंगल किसम ना सर पत्रा जंगल किसम रा में देई परिबानी तो विलेज जंगल ना सर देई परिबानी गोचर? ना सर हमर जमीटा सर लिजेबल हेथिबा दरकार दीटा क्राइटेरिया आवाज लगी अनामादी हेतिबो लगि जमीटा सर आबाद योग्य अनाबादी हेथिले हमें देई परिबा देयबो। आज्ञा सर अच्छा डू यू माने कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड ऐड करतो तो आज्ञा सर हमर गवर्नमेंट खाटा रे मेजरली चारिटा प्रकार लैंड थाए आबाद योग्य अनाबादी आबाद अयोग्य अनाबादी रखित सर्वसाधारण निजारत खाना कहले कोन बुझो? निजारत निजारत कहले सर निजारत इज रिलेटेड टू द कैश और ट्रेजरी निजारत खाना कहले सर हमर सही सेक्शन जी कि कैश रे ट्रेजरी रे डील कले हमें केते लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कले केते हमर मिसलानियस आसिला रेवेन्यू केते हमें सर कलेक्शन कलु एनफोर्समेंट निजारत रो कोन जो मेन खाताटा आईएस कोले सेटा कोन खाता तापरे सब्सिडियरी रजिस्ट्रार सब गुडा को करि थाए। आज्ञा सर से मेनटा कोन जोटा सब गुडा को सल्तमामी बिले कोन? आज्ञा सर सल्तमामी आज्ञा सर सल्तमामी माने कोन? सर साल्तमामी मानेला दैट इज सर दैट इज एनुअल अकाउंट क्लोजिंग वी कॉल दैट साल्तमामी। अच्छा कोन हुए सतिरे? Sir, we collect land revenue throughout the year. Land revenue, cess, water rent, we collect that throughout the year. कोन शेष अछि?
Sir, cess hela gote cess hela that is majorly a tax on tax, and we as we collect land revenue, a tax on that is called as cess, and another is nistar cess. Nistar cess ଅଛି Nistar cess is, sir, it is collected for minor forest produce. If a land has some forest and people are collecting minor forest produce from that land, they are liable to pay nistar cess. अच्छा सेस निस्तार सेस आज्ञा सर गोटे उठी गला गवर्नमेंट ताको उठे गला ता कोन सब्जेक्ट थिला उठे गला गवर्नमेंट एटा कलेक्शन करिवो नै सॉरी सर पत्थकर अछि एबे आज्ञा पत्थकरटा अछि ना सर पत्थकर नाही पत्थकर गोटे थिला गोटे बहुत प्राचीन समय थिला पत्थकर सर नाही सेटा एबे नाही ना अच्छा तगड़ा गवर्नमेंट उठे नहीं करी ठीक अछि Okay, anthropology subject na. आज्ञा मैम How do the social control law invest in primitive society? आज्ञा मैम Primitive societies, how it is related to modern societies now? One primitive society that was also controlled by some law. There were some social stratifications. Currently also we are though it is more regulated at that point of time, that was very rigid. Even if we see the Vedic times, in Rigvedic times it was not that rigid, it was a bit flexible. Even common dining for women was permitted, marriages between different castes were permitted. How that fundamental thing is implemented here? Just give an example. To be specific. To be specific, ma'am, previously in Rigvedic society we had marriages between different castes. Now also government is encouraging marriages between different castes to reduce the inequalities between the caste. Law and order, nothing about marriage, family and all this. Law and order, ma'am, in primitive society, though they are regulated some sort of law, now it is more flexible, I can say. Like they were controlled, they had a leader of their group. Currently, yes, prepare that answer because anthropologists they may ask you as you are in administration. madam, कौन our answer? Answer is this the mechanism ताको जो change सेटा करो ताको mechanism पढ़ियो सेटा mechanism अच्छी law and control anthropology social control mechanism ताको बेटा अच्छी law and justice है. Just read that and our present mechanism of controlling law and order. आज्ञा. ताको relate करो. आज्ञा. Okay. आज्ञा मैम. मुझे लोग टाइम होगा नहीं मैं फोन करियो तो करूँ कोई भी. आज्ञा मैम. आज्ञा मैम. Okay. And structuralism, functionalism is one theories who are the exponents and what is just one put a point. I apologize, ma'am. I'm not able to recall now. Theories whatever but the structuralism, functionalism यहाँ तो नहीं कि हमारे society structure and function. Function is what marriage, family and all this. Yes, ma'am. So structure is what social structure. Social structure, caste, ये सब नहीं सब ये माना को theories को नहीं थी. आज्ञा मैम. Let's go through that. Okay. आज्ञा. बाकी you are already in that profession, so nothing much to tell about that. Subjects देखो. आज्ञा मैम. और जो उड़ा को पढ़ी पारला नहीं जैसे उसे उड़ा को देखो. मैम ऑप्शनल ले जो पढ़ी नहीं तो सेति पे मने पड़ला नहीं. बाकी हम से इधर ऑप्शन so it's a plus point for you definitely. आज्ञा. And so तो पढ़ी कि just be conscious about your dressing when you go for the interview. That I don't have to tell you already know. Yeah. You have here. But today just you came casually. That is what you showed us. So that should not be there. Actually, okay. I rushed from office, so I didn't get time to dress up. That is understood. Just keep that in mind, okay? Yes, ma'am. When you are in service, that to additional tahsildar. Again, sir. Say what tahsildar means revenue officer. Yes, sir. tahsil शब्द का होची पारसी शब्द. Yes, sir. एटा ओडिया में इंगी नुई. Again. tahsil. tahsil tahsildar होची. Again, sir. तेणु एगुडा को सेतमे हम तो कोई इंग्लिश रे कोन ही जे revenue officer. Again. Or what does that mean? Revenue officer कौन? Revenue officer, the one who is responsible for the collection of revenue. Right. ठीक है. जैसे सब अच्छी पाठ हो. Additional tahsildar कौन चार्ज दिया है? Sir, I am allotted 4 RI circles and I am. 4 RI circles. Again, sir. कौन से गुडा करा? Sir, RI Kankadpal
आरआई मणिपुर, आरआई बाल्याम्बा, आरआई भापुर. अच्छा कौन सब होउची छोड़ा Sir, I am responsible for the revenue cases, for the mutation cases, and for the conversion cases, and also for the Thank you, ma'am. For the partition cases and for the collection of land revenue and for the OGLS cases. OGLS? Yes, sir. এটা কোন ফর্মটা? Odisha Government Land Settlement Act 1962 and Odisha Government Land Settlement Rules 1983. আচ্ছা সেটা আউটে আছে जो सीलिंग जोटा कोन अछि सीलिंग करिया कोन Sir, ceiling land is ceiling. कोन ओ एक जाउ सिना Sir, ceiling land that comes under when Odisha State Abolition Act came. आउट अछि जोटा एक्टिव होला 1972 की 74 रे जोटा सरकार ने Bhudan movement? नहीं से एक्ट ओडिशा सीलिंग एक्ट नाम मने OLA ओडिशा Odisha Land Reforms Act 1960. ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स OLA. Yes, sir. लैंड रिफॉर्म्स है Yes, sir. 1960 60. Yes, sir. सेटा सीलिंग केस ऊपर सेटा आसुस्ता That was for the land reforms. ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट Yes, sir. ना बोला सेटा 60 ना 70 60, sir. तो सीलिंग केस नथियो बोलतो ना सर. सीलिंग केस नहीं ना सर. ताले कोन सब केस उडा सब अछि Sir, majorly mutation case, conversion case for non-agricultural purposes. एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर Yes, sir. And partition cases on mutual agreement. पार्टीशन कैसे हाउस माने पार्टीशन Yes, sir. Vasundhara cases to provide land to homesteadless. कहते लिखा है अलर्ट में गवर्नमेंट नॉर्म कहते हैं Sir, we can allot up to 10 decimal of land. up to 10 decimal of 6 decimals Yes, sir. Up to 10. But we are, in general we are allotting 4 decimals. अच्छा एइगुडा को सब थोरो हो एइगुडा को माने से चाकरी रे अच्छा माने करिया पता नहीं आज्ञा सर. वर्तमान के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रो के मेंबर के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबर श्री V वेणुगोपाल राव. वेणुगोपाल राव Yes, sir. बताइए से बड़ा बोलो रेवेन्यू रो टॉप लेले से आज्ञा चीफ सेक्रेटरी भी होती रेवेन्यू सो फार रेवेन्यू इज कंसर्न मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हेड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न चीफ सेक्रेटरी इज द हेड एक डिवीजन नहीं लाते ठीक है जी आज्ञा सर. गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर. नमस्कार सर. थैंक यू